أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعاها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف واليعون فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب الأشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولحم الجوار المنشآت في البر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروشا بطائن نحام استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتشحن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنسان قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وعبقري إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. सबक नंबर 9 कायदे आज़म। इस पाक वतन का तू रहनुमा है और भी रहबर तू इन सब से बड़ा है, इन सब से बड़ा है। ए कायदे आज़म बातिल के मुकाबिल किस शान से आया, काफिर को बिठाड़ा वासिब को गिराया। ए मर्द मुजाहिद अल्लाह रे दमखम ए कायदे आज़म ए दीन के खादिम ए कौम के मोहसिन हम तुझको बुला दे हरगिज नहीं मुमकिन। सब अपने पर आए करते हैं तेरा दम ए कायदे आज़म तू जिंदा रहेगा ताबिंदा रहेगा। मिल्लत का सितारा ताबिंदा रहेगा। रहमत का निशान है इस्लाम का परचम ए कायदे आज़म। मैं आपको रीडिंग करके दिखाता हूँ। Amna lived with her parents in a small apartment building on a bushy street close to the country of the town. Her mother and father worked hard at their jobs and Amna worked hard at school. During the weekend, Amna's parents had a lot to do. On Saturday, one of them took Amna to the library and then to her gymnastics class, while the other went shopping for food. Then they would do the household chores, speak to relatives on the telephone, and spend
a long time. Preparing food. Amna's mother liked to make lots of curry and divide it up into portions so that she could hurry up the food quickly every night after work. Her father liked food, but he could only cook one recipe. Dad's special vegetable surprise. He made it for Sunday lunch every week while they cooked. Amna lived to read every weekday morning. Amna and her parents left the apartment together and walked down the stairs to the street. Amna would say goodbye to her parents and go down the street to her bus stop. She carried her books and her lunchbox of leftover food from the day before in a big backpack. Her parents walked up the road together and went opposite directions. At the end of the street, her father usually caught a bus and sometimes took a taxi, but her mother always walked late in the evening. Once everyone was home, her parents would rush around to get everything ready for the next day while cooking rice and eating that day's portion of curry. While they ate, they would talk about their day. Amna's parents always asked what happened at school today. They liked to hear all about it. Then they would talk about their day. Dad often had a funny story to tell about his journey to work, and Mom always laughed and said, "Oh dear, you should just walk to work and save yourself all that rock." Mom and Dad always told about what they had eaten for lunch. Dad often went to a restaurant. Today I had such a wonderful vegetable soup with a soft warm bread roll. It was delicious. It was very delicious. Mom ate in the canteen at work sometimes. She did. Not like the food. Today we had Mexican beans and tortillas. They were terrible. I wish I had taken a packet lunch. On other days, she would talk happily about the meal she had eaten, the roti and raita that I ate today were delicious. The roti melted always in the mouth. One day, Amna suddenly said, "I have the same lunch every day, the same dinner most days, and I have never been to a proper restaurant. We should take you to a restaurant," Dad said. Which one would you like to go to?" asked Mom. Amna shrugged her shoulders.
her dad had an idea. I will bring home some meals next week and you can choose a restaurant to go to next Saturday. On Friday night, the family rethought the menus. One restaurant served food from all over the world. Its menu had pictures of famous landmarks on the front. Anna chose that one and her parents explained all the different dishes to her. They talked exactly about the big plates full of delicious food that Amna would be able to try. Amna did not eat much dinner that night because she was too excited. She read the menu before she went to bed. I cannot decade with her to have the British fish and chips or the French chicken, she said to her mom. Her mom laughed and joked. Maybe you can have one of each something on the menu. During the night, Amna had a dream. She walked into the restaurant with her parents and sat at a table covered in a smart white cloth. There was a big tray in the front of her us. A team of waiters started putting food on it. Amna began to eat. First, she tried some delicious Chinese dumplings and then some spicy Italian meatballs. Amna was happy enjoying the food, but the waiters continued to bring her more and more delicious each one plate. High with amazing meals. Amna's mouth was full, her stomach was full, and she wanted to stop eating. But the waiters kept bringing more and more food. Her parents, the restaurant's owner, and her head teacher were all standing around the table saying, "Eat up! Don't waste the food!" And the food kept spilling out, and Amna had to keep eating. Her stomach had swollen up like a balloon. It was starting to hurt. "No more, please, no more!" she shouted. Suddenly, Amna woke up. Her bed covers were twisted around her and her hands were over her mouth. Her mother came into her room. Come on, get ready. We have a lot to do before your special treat, and I need your help." "Mom, my stomach hurts," said Amna. "You are probably hungry.
hungry, replied Mom. Think of all the lovely things you can have at lunchtime. Amna quickly and started to get ready. She ate a teeny breakfast and tried not to think about her dream as she helped her parents with the children. By lunchtime, she was very hungry and was still a bit worried. At the restaurant, she looked at all the strange sounding names of the exotic dishes and listened to her parents talking about what they might have. Her parents seemed very happy, and Amna did not want to rain it for them. Then she saw something and smiled. When the waiter came to take their order, Amna's father ordered a more canned stew, and her mother chose the frozen spicy. And for you, madam, asked the waiter. Anna said, I did like my favorite rice and curry, please. Her parents looked surprised and then laughed. Excellent choice, madam, said the waiter. Assalamu alaikum. I am Ayaan Rayaan from Kashmir Kids channel. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्या है टॉपिक चलें, पढ़ाई। टॉपिक हमारा पढ़ाई है और ये है चैप्टर नंबर 18 1937 to 1946 द लास्ट स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस। ये वाला चैप्टर है ये। इनको जानते हैं आप? कमेंट्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयान फारूक फ्रॉम कश्मीर किड्स चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है? चैप्टर नंबर 18 पढ़ाई। इल्म दो लजाकर। ये है चैप्टर नंबर 18 1937 to 1947 द लास्ट स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अयान फारूक फ्रॉम कश्मीर किड्स चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कायदे-ए-आज़म नहीं है, पढ़ाई टॉपिक है हमारा। यह है चैप्टर नंबर 18 1937 to 1946 द लास्ट स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करो। Here we take a few steps backwards to trace the journey to independence. In this Second World War, India again supplied hundreds of thousands of soldiers to fight along with the British. In 1940, the British government made the August offer towards Greater autonomy
Autonomy. This seemed to give India all that it had asked for: full independence after the war, and the Indian people could make their own constitution, but Congress rejected it and once more started What's story about violent क्या बोलूं? Civil. Violent civil disobedience. सेवेंथ क्लास का है, मैट्रिक क्लास. disobedience and roids. अब बताओ इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? अब आप ही सुन रहे हैं ना, यही तो समझ क्योंकि एक लफ्ज़ तो आपको समझ आया ही होगा, जो आपने इतनी अच्छी रीडिंग किया आपने, माशाल्लाह. समझाना काम आपने. फिर भी कुछ तो बताइए. ऐसे ना पढ़ क्या रहे थे? मैं पढ़ रहा था इस्लाम को बोलते हैं, इल्म का चैप्टर. इल्म का चैप्टर. क्या बता, आपको पता क्या चला? एक लफ्ज़ बता दो, आपको समझ के आइए. मैंने आपको बोला समझ के पढ़ना है. चुप करो, वीडियो बंद करो. समझाओ पहले, मुझे समझाओ पहले. समझाता हूँ यार, समझाता हूँ. क्या नाम? Here we take few steps. रुक जाओ यार, समझ लो पहले, वीडियो बंद करने की मुझे पता है. Here we take a few steps backward to trace the journey to independence. यानी इसके अंदर समझो, मेरी सीधी टांग सीधी करो. मेरी सीधी डाल. The last steps to independence, इसका मतलब बताओ आपको. किसका? The last steps to independence. ये ऊपर की लाइन में the last steps to independence. Chapter 18 is the last. कुछ भी नहीं आता यार. The last steps to independence. रेयान तो चला गया. चलिए हम भी चैप्टर समझते हैं. मैं भी अभी नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ. The last steps to independence यानी आखिरी कदम आज़ादी की तरफ, पाकिस्तान की आज़ादी की तरफ, 1937 से लेकर 1947 तक. Here we take a few steps backward to trace the journey to independence. In the Second World War, India again supplied hundreds of thousands of soldiers to fight alone with the British. In 1940, the British government made the August offer towards state autonomy. This seemed to give India all that it had asked for. Full independence. After the war, the Indian could make their own constitution, but Congress rejected it and once more started violent civil disobedience and riots. Meanwhile, in March 1940 मार्च में कायद-ए-आज़म at the Conference of Muslim League in Lahore, जो कायद-ए-आज़म थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये जब कॉन्फ्रेंस के ऊपर थे मुस्लिम लीग के अंदर लाहौर में, issued the Lahore resolution that he should separate states from Muslim and Hindus. This was a complete and dramatic change of policy. इन्होंने उनको ये कहा कि ना मुस्लिम्स और हिंदूस के अंदर सेपरेट स्टेट्स होने चाहिए, अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए उनके, एंड अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए. दिस वाज अ कंप्लीट एंड ड्रामेटिक चेंज, एक कंप्लीट चेंज था.
ऑल हिज पॉलिटिकल लाइफ, इनकी सारी जो पॉलिटिकल लाइफ है सब में। मिस्टर जिन्ना हैड फाउट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया विद बोथ साइड। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कायदे आजम, इनने बोथ साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फाइट किया था। नाउ ही डिमांडेड टू इंटायरली सेपरेट स्टेट्स। फिर उन्होंने डिमांड किया था दो मुल्कों को, यानी टू सेपरेट स्टेट, दो अलग मुल्क, दो आज़ाद मुल्क चाहिए थे। The name for the new Muslim countries had already been suggested by a young Indian student at Cambridge University in Britain. The name for the new Muslim countries, यानी जो मुस्लिम कंट्रीज के लिए जो नया नेम था वो पहले ही इन्होंने सजेस्ट कर लिए थे, यानी ढूंढ लिया था। और ये उन्होंने एक इंडियन स्टूडेंट ने किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब वो उधर बरतानिया में थे। चौधरी रहमत अली नाम था उनका, चौधरी रहमत अली, जिनका हम लोग सुनते हैं पाकिस्तान का नाम किसने He said that a new Muslim state could be named after the regions it was comprised: Punjab, Afghania, NWFP. उन्होंने कहा कि मुस्लिम स्टेट्स अपने वो जो होते हैं, क्या कहते हैं, रिलीजन नेम्ड आफ्टर रिलीजन्स, अपने रिलीजन से मिलते जुलते नेम होने चाहिए इनकी। इट वाज कंपाइल्ड ऑफ पंजाब, अफगानिया, कश्मीर। पंजाब, अफगानिया, कश्मीर तीनों के स्टार्ट अप किया वर्ड्स देखें, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, इंदस, सिंध, बलोचिस्तान। इस सारे में से इनका नाम ढूंढा गया। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ म्यूजिक से। ये पहले ये पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान और के से कश्मीर। पाक हो गया, पी ए के पाक, और इस यहाँ पे आई एस इंदस, सिंध। पाकिस, और यहाँ पे बलोचिस्तान, पाकिस्तान का वर्ड इन्होंने बना लिया। In 1942, with the Second World War at its peak, the British government sent a delegation to India under Sir Stafford Cripps, a senior statesman. His purpose was to explain the Japanese threat to India and its return for India's export. यहाँ पे हमें ये एक मैप इन्होंने दिखाया है, यानी जो द बाउंड्रीज जो थी 1947 में जो इन्होंने दिखाई थी कि पाकिस्तान कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा होगा, ये देख सकते हैं। इसमें ये बांग्लादेश है, यानी उस वक्त इसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे धक्का आप देख सकते हैं, धक्का इनका जो है, और यहाँ पे भूटान, उसके बाद ये पूरा इंडिया ऑरेंज में, और उसके बाद ये ग्रीन पाकिस्तान, और यहाँ पे जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। In 1945 when Germany surrendered the British Viceroy, यानी 1945 में जब जर्मनी के लोगों ने सरेंडर कर लिया था, General Wavell called the similar conference. India was offered total political power. India को ऑफर की थी total political power with the Viceroy just as ceremonial figure. An executive council with equal representations of Hindus and Muslims was to be formed and given all ministerial positions except defense and foreign affairs, which would be with the Viceroy. चलिए आगे पढ़ते हैं। Safety with the lengthy chapter है। बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है, तो सारी रात लग रही है इसको। चलो करते हैं, आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस फॉर द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 1947 की बात आ गई। इलेक्शंस हैड टेकन प्लेस इन बरतानिया इन 1945। इलेक्शंस में प्लेस ले ली, अपनी जगह ले ली थी बरतानिया में 1945 में। These brought a new Labour government to power with completely different ideas from conservative one which have been defeated.
विद कम्प्लीटली यानी कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग आइडियाज थे उनके फ्रॉम द कंजर्वेटिव की तरफ से, वन विच हैड बीन डिफीटेड, जो हार गए थे। द न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो नया वजीर आजम था, मिस्टर एटलीस ने बोला that any party which had the support of Muslim of India could from governance there, and that Britain would withdraw from the subcontinent in July 1948. उन्होंने विड्रॉ कर लिया सबकॉन्टिनेंट से जुलाई में 1948 में। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने आस्क्ड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आजम थे पाकिस्तान के बानी, उन्होंने ये उनसे कहा कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, यानी अलग मुसलमान आज़ाद मुल्क चाहिए। एंड ब्रिटेन एग्रीड, यानी जो अंग्रेज थे वो मान गए। इंडिपेंडेंस डेट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड टू अगस्त। जो इंडिपेंडेंस आज़ादी की डेट थी वो अगस्त से आगे थी, 1947 टू अगस्त 1947, which left only a few weeks for extremely complicated arrangements to sort it out, जिसमें सिर्फ कुछ ही वीक्स लगे जो आम सी अरेंजमेंट्स थी उनको सॉल्व करने में। An Indian independence bill was rushed through Parliament in London, which said that there should be two independent dominions in Commonwealth. तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई दो आज़ाद मुल्क होने चाहिए इन कॉमनवेल्थ के में, तो इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। When West Pakistan as today and East Pakistan now Bangladesh, the princes were agreed to join whichever of the two new states. ये लोग, इनके जो प्रिंसेस थे, प्रिंस जो होते हैं शहजादे थे, वो एग्रीड हो गए आपस में ज्वाइन होने के लिए। And a boundary commission was set up under a senior British judge, Sir Cyril Radcliffe. A boundary commission was set up under senior British, यानी एक ये बाउंड्रीज जो कमीशन था, यानी यहाँ से ये पाकिस्तान का इलाका है, ये इसका इलाका है, ये इस आदमी ने, इस जज ने यानी करार दिया था। Helped by two Muslims, two Hindu judges to decide exactly where the boundary, यानी दो हिंदू जजेस उसके साथ मिलके दो मुसलमान जजेस और दो हिंदू जजेस उनके साथ मिलके इन्होंने डिसाइड की थी कि पाकिस्तान का नक्शा और इंडिया का नक्शा। Independence sought remains since 6 million Indian and 6 refugees from Pakistan were forced into India, and 8 million Muslims were forced to flee to Pakistan. There were dreadful atrocities on either side. Trains carrying refugees were detained. Muslim ruler opted to join Pakistan but was seized by Indian, wanted to remain independent but was occupied by Indian forces. तो यहाँ पे बता रहे हैं स्टेट ऑफ हैदराबाद की जो स्टेट थी, मुस्लिम रूल इंडियन मेजोरिटी, मुस्लिम की रूल में थी, इंडियन मेजोरिटी थी, लेकिन उसमें हिंदू रहते थे। वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, वो चाहते थे कि वो दोबारा से आज़ाद हो जाएं, बट वाज ऑक्युपाइड बाय इंडियन फोर्सेस, मगर उसको इंडियन फोर्सेस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1948 में। द हिंदू रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, मेरा वो गाँव जम्मू कश्मीर है। The Hindu ruler of Jammu Kashmir, where the majority of population was Muslim, deciding against the advice of his Hindu prime minister, joined India. यानी जो जम्मू एंड कश्मीर का उस टाइम जो था, क्या कहते हैं, वजीर आजम, तो वो उनके साथ मिल गया क्योंकि वो भी इंडियन था और उन्होंने इंडिया के साथ मिल गए। वो पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, पाकिस्तान इसके खिलाफ गया कि ये तो ज्यादती है। And war broke out between India and Pakistan. The United Nations intervened and said that the plebiscite must take place to leave the people themselves to decide which country they want to belong. 1949 के अंदर ये एक जज ने बोला, यानी इसने बोला कि कश्मीर खुद डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो लड़ने लगे थे 1949 में। इसने बोला well over 50 years later, 50 साल बाद, India has refused to honor the UN's decision
इंडिया को मान लिया गया. अब knowing what result would be, there have been two further wars between the two countries which problem still unsolved. यानी यहाँ पे खतरा था दो कंट्रीज के लड़ने का. और यहाँ पे आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं. ऐसे भी आप खबरों में कश्मीर के हमने पिक्चर्स तो देखे होंगे. यहाँ पे उन्होंने तकरीबन खबर पता नहीं कब की. ये पिक्चर है कश्मीर की, द डिस्प्यूटेड टेरिटरी. मेरा गला खुश्क हो गया. उसके बाद पाकिस्तान वाज नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट. पाकिस्तान अब एक आज़ाद मुल्क था बट वाज टेरिबली डिसएडवांटेजेस, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा खराबियां भी थी. तो प्रॉब्लम्स और फेस भी, यानी इसमें हम बताएंगे हमें कि प्रॉब्लम्स जो फेस की पाकिस्तानियों ने. तो इसके अंदर कहाँ पे आए हम लोग. कश्मीर वाज एन ओपन माउंड इवन After the UN ceasefire, it kept tension high between India and Pakistan. When what we needed after cooperation, it meant much money and effort had to be devoted to defense money, which was desperately needed to build up the state. तो यहाँ पे आपको ये नजर आ सकता है कश्मीर का नक्शा. ये है जम्मू एंड कश्मीर जिसके पर इंडिया का कब्जा हुआ है, और ये AJK यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान का है. यहाँ से चाइना, यहाँ से फिर इंडिया और यहाँ से पाकिस्तान, और बेचारा बीच में फंस गया. तो आगे कहाँ पड़े. मैं थक गई, बोला कुछ हो गया मेरा चैप्टर तो खत्म ही हो गया. पाकिस्तान. तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट मरहले में. फिलहाल तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे आज़म ने कितनी मेहनत की, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो था उसके ऊपर किस तरह इंडिया ने कब्जा किया. और क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो वज़ीर आज़म था वो भी इंडियन था, हिंदू था, तो उन्होंने आपस में गुटजोड़ किया और वो मिल गए. और अब कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान के पास छोटा सा कश्मीर का टुकड़ा यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर